ગુજરાતી બોલું. 2 દિવસ પહેલા મને જ્યારે જયેશભાઈ કીધું તમારે આવવાનું છે, તો ત્યારે આટલી ઠંડી નહોતી, અને આજે ઠંડી વધારે છે, નહીં નથી? એટલે તમારા માટે નોર્મલ હશે. હું સુરતથી આવું છું, અમારે ત્યાં હવે ઠંડી ઓછી થઈ ગઈ છે, અને આટલી ઠંડીમાં 10 વાગે સાંભળવાનું આવે તો હું સમજી શકું કંટાળો આવતો હશે. ખેર, જેમ વાત કરી કે આજે શું છે, શેના માટે આપણે એકઠા થયા છે? હિન્દુ સંમેલન. એટલે હિન્દુઓનું સંમેલન છે. એટલે આપણે બધા જે હિન્દુ છે બધા ભેગા થયા છું. શેના માટે ભેગા થયા છે? સંમેલન માટે. સંમેલન શેના માટે છે? તો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, જેને આપણે RSS કહીએ છીએ, સંઘ કહીએ છીએ, એને 100 વર્ષ પૂરા થયા. એ 100 વર્ષ પૂરા થયા એ ઉપલક્ષમાં હિન્દુઓનું સંમેલન થવું જોઈએ એવો વિચાર આવ્યો. અને આખા ભારતમાં જેમ તમારા નગર બસ્તીમાં આ સંમેલન થઈ રહ્યું છે, એમ આખા દેશમાં અલગ અલગ નગરોમાં, ગામોમાં, મંડળોમાં આ પ્રકારના સંમેલનો થઈ રહ્યા છે. તો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એટલે RSS નું નામ તમે સાંભળ્યું હશે, બધાએ સાંભળ્યું છે? 1925 વિજયાદશમીના દિવસે ડૉક્ટર હેડગેવાર, ડૉક્ટર સાહેબના નામે ઓળખીતા કેશવ બળીરામ હેડગેવાર, જે સ્વતંત્રતા સેનાની હતા, દેશના સ્વતંત્ર્ય માટે જેલમાં પણ ગયા છે, લડાઈ પણ કરી છે. પણ એમના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આજે અંગ્રેજો છે, એના પેલા મુગલો હતા, એના પેલા બીજા કોઈક હતા, એના પેલા ત્રીજા કોઈક હતા. સતત આપણા દેશ પર અનેક અલગ અલગ પ્રકારના આક્રાંતાઓએ આક્રમણ કર્યું છે. બરાબર છે ને? તો આજે આ અંગ્રેજોને આપણે બહાર કાઢી મૂકીશું તો આપણી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે એવું નથી. કાલે ત્રીજો કોઈક આવશે. સમજ પડે છે? એમને એ વિચાર કર્યો કે આ સતત થતા આક્રમણોથી આ દેશને બચાવવો હોય, સુરક્ષિત કરવો હોય, તો માત્ર અંગ્રેજોને પાછા મોકલીને કામ થવાનું નથી. એક એવી પરમાનન્ટ વ્યવસ્થા ઊભી કરવી પડે કે જેનાથી આ દેશ સદૈવ સક્ષમ, સમર્થ અને શક્તિશાળી બનેલો રહે. અને જો આપણો દેશ શક્તિશાળી હશે તો કોઈ અંગ્રેજ હોય કે મુગલ હોય કે બાબર હોય કે બાબરનો બાપ હોય, આપણે એનાથી કંઈ ફરક પડતો નથી. એટલે એમને વિચાર્યું કે કોઈક બાબર આવે ને કોઈ ઔરંગઝેબ આવે, કોઈ તુગલક આવે, કોઈ રોબર્ટ ક્લાઇવ આવે, અને સતત આ આક્રમણોમાંથી સમાજને બહાર લાવવો હોય તો હિન્દુ સમાજ સંગઠિત થવો જોઈએ. એ સમયની વાત છે જ્યારે લોકો એવું કહેતા કે તમે મને ગધેડો કહો પણ હિન્દુ નહીં કહેતા. એ સમયમાં એમને કીધું કે હું ડૉક્ટર કેશવ બળીરામ હેડગેવાર કહું છું કે આ ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે અને હું હિન્દુ છું. અને 1925 એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 100 વર્ષ થયા ને? 100 વર્ષ પહેલા એમને આ કાર્યનો આરંભ કર્યો. અને આજે એ કામ આખા ભારતમાં, અને ભારત સાથે તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, ભારત બહાર પણ જ્યાં જ્યાં હિન્દુઓ વસે છે, વિશેષતઃ આપણા ગુજરાતના લોકો તમને ખબર છે, અમેરિકા, લંડન, બધી જગ્યાએ છે, તો ભારત બહાર પણ જ્યાં જ્યાં હિન્દુ છે ત્યાં ત્યાં હિન્દુઓનું સંગઠન કરે છે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ. એ સંઘને આજે 100 વર્ષ પૂરા થયા છે. તો સંઘ એટલે શું છે? તો સંઘ માટે અલગ અલગ બધાની ધારણાઓ હશે, પણ સીધી એક જ લીટીમાં વાત કહેવાય છે કે સંઘને સમજવું હોય તો શાખામાં જાઓ. શાખા ખબર પડે ને? સવારે પેલો ધ્વજ મૂકીને રમતો રમતા હોય એને શાખા કહેવાય. એટલે સંઘ શું છે જાણવું હોય તો કોઈ પુસ્તક વાંચવાની જરૂર નથી, શાખામાં જતા રહો. તમારી પાસે બધા કાર્યકર્તા છે, એમને પૂછો શાખા ક્યાં લાગે. તો આ હિન્દુઓનું સંગઠન થવું જોઈએ, આ વિચાર આવ્યો અને એ વિચારને આજે 100 વર્ષ થયા. તો એવો આપણો આ હિન્દુ સમાજ. જ્યારે હિન્દુઓની વાત કરીએ ત્યારે તમારામાંથી અમુક લોકો પિક્ચર્સમાં, ટીવીમાં, સિરિયલમાં, ગીતોમાં અને એકેડેમિક્સમાં પણ, કોલેજોમાં, યુનિવર્સિટીઓમાં આપણા દેશ વિશે વાંચીએ તો શું અત્યાર સુધી ચાલતું હતું કે આ દેશ ક્યારે બન્યો? 1947માં આપણા દેશમાંથી અંગ્રેજો ગયા પછી આ દેશ બન્યો, એવું કહે છે ને? આ વાત સત્ય છે કે? તો આપણો દેશ ક્યારે બન્યો?
हाँ ये तो है कोई कही सकશે? वांधो नहीं चालो वही तो बोल रहे हैं, गलत जानकारी है ये। काले रजा છે કે ચાલુ આપકા જો આવું વિચારવા વાળા કોઈ પણ વ્યક્તિનો કોઈ જ વાંક નથી, કેમ કે આપણી સ્કૂલોમાં એ આપણને બતાવવામાં આવ્યું ને, અને આપણને તો ખબર જ છે કે પુસ્તકમાં જે લખ્યું હોય એ સાચું હોય, પણ આપણને એ નથી ખબર લખવાવાળો કોણ છે. લખવાવાળો ચીનથી પૈસા લઈને લખતો હોય, તમને શું ખબર? તો 1947માં દેશ બન્યો કે આપણે અલગ દેશ છીએ કે? અત્યારે પણ એવી વાત ચાલે છે કે આ દેશ એક દેશ છે જ નહીં, ક્યારે હતો જ નહીં. આ તો કેવું છે, રાજસ્થાન છે, ઉત્તર પ્રદેશ છે, બિહાર છે, તામિલનાડુ છે, એવા અલગ અલગ દેશ છે, એને ભેગા કરીને આ એક દેશ બન્યો છે. અત્યારે એક ભારતના નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી એક જગ્યાએ જઈને એવું બોલ્યો कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये एक देश नहीं है, इसको एक बनाया गया है. हम भी बोलते बोलते बात करता करता कह रहे भूल में એવું બોલાઈ જાય છે कि हमको एक होना है, हमको एक होना है, हमको एक नहीं होना है. हम एक है ये हमें जानना है, मानना नहीं है, जानना है. फिर प्रश्न आएगा कि भाई हम एक है, इसका आधार क्या? मैं तो मराठी बोलता हूं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई ऐसे तिलक लगाता है, कोई ऐसे लगाता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई माता जी की पूजा करता है ना, विविधता है ना. कोई इडली सांभर खाता है, कोई लिट्टी चोखा खाता है, कोई जलेबी फाफड़ा खाता है. हम एक कैसे है? हमारा भोजन अलग है, हमारे कपड़े अलग है, हमारे देवता भी अलग है, तो हम एक कैसे? बताओ कैसे? ऐसे एक है हम कि वहां अयोध्या में राम लला का मंदिर बनता है तो આપણને આનંદ થાય છે કે નહીં? કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ રામ મંદિર તો ત્યાં યુપી બનવાનું છે, આપણે શું લાગે વળગે એવું કહીએ છે? હે, ઉત્તર ભારતમાં જે કૃષ્ણને બાકે બિહારી કહીને જેની પૂજા થાય છે, એને આપણે આપણા મંદિરમાં ઘરમાં એને કાનુડો કહીને પૂજા કરીએ છીએ કે નહીં? એટલે આપણે એક છીએ. આપણે એક શેના આધારે છીએ? એક સમાન સંસ્કૃતિના આધારે આપણે એક છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? આટલો મોટો દેશ છે એટલે અલગ અલગ ભાષા, અલગ અલગ ખાનપાન હોવાનું છે, પણ આપણે એક શેના આધારે છીએ? તો એક સમાન સંસ્કૃતિના આપણે સંવાહક છીએ, તેથી આપણે એક છીએ. અને સંસ્કૃતિનું નામ છે સનાતન હિન્દુ ધર્મ સંસ્કૃતિ. આપણે હિન્દુ છીએ બધા જ. કોઈ કાળો હોય, ગોરો હોય, કોઈ મધ્યમ હોય, કોઈ વધારે હાઈટનો હોય, ઓછી હાઈટનો હોય, કંઈ પણ ખાતો હોય, કોઈ પણ ભાષા બોલતો હોય. સ્વામી વિવેકાનંદ એવું કહે છે કે કોઈ પણ ભાષા બોલવા વાળો, કોઈ પણ ક્ષેત્ર પ્રાંત ગામનો, કોઈ પણ રંગનો, માત્ર હિન્દુ નામધારી હોય તો એ તમારા રક્ત માસનો સગો ભાઈ છે. આ ભાવ તમારા મનમાં આવતો હોય તો તમે હિન્દુ છો. સમજ પડી? એનથી આગળ એવું કહે છે કે આ તમારાથી અલગ દેખાતો, અલગ રંગનો, અલગ પહેરવેશ પહેરતો હિન્દુ નામધારી વ્યક્તિ, એનું દુઃખ તમને તમારું દુઃખ લાગતું હોય, એની પીડા તમને તમારી પીડા લાગતી હોય તો તમે હિન્દુ છો. એવું છે કે? પણ આપણને એવી પીડા થાય છે કે આપણે એવું કહીએ છીએ જે થાય છે તે તો બંગાળમાં થાય છે, આપણે શું લેવા દેવા? એવું લાગે ને આપણને कि अभी ठीक है परिस्थिति खराब है लेकिन बंगाल में, हमारे यहाँ तो अभी सब ठीक है. ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है क्या? हिंदुओं का संगठन करना है, हिंदुओं को जगाना है. मतलब क्या करना है? जागेलो हिंदू એટલે શું? તો જાગેલો હિન્દુ એને કહેવાય કે જેને રાજસ્થાનમાં માં પદ્મનીના જોહારને લઈને એના મનમાં આજે પણ પીડા થતી હોય તો એ જાગેલો હિન્દુ કહેવાય. ત્યાં બંગાળમાં કોઈ હિન્દુ દીકરાને ચોરાહા પર લાવીને જીવતો સળગાઈ દેવામાં આવે તો પોતાના દીકરાને સળગાવે હોય એવી પીડા જો મનમાં જાગે તો કેવું આપણે જાગૃત હિન્દુ છીએ. અને એ છે જ ભાવ. તમે ક્યારેક વિચારજો કે એ ભાવ નથી એમ નથી,
પણ એ ભાવને દબાવી દેવામાં આવ્યો છે અથવા એને ખોટી રીતે એડ્રેસ કરવામાં આવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ દેશ એક ક્યારે હતો નહીં અને એક થઈ શકવાનો નથી. તેથી શું કરો? કાશ્મીર જુદું કરી દો, પેલી બાજુ નોર્થ ઈસ્ટ અલગ કરી દો, બંગાળ અલગ કરી દો, કેરળ અલગ કરી દો. આ દેશ ક્યારે એક હતો નહીં અને ક્યારે થવાનો નથી. આવું વિચારવા વાળા લોકો છે. એટલે મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભારત ક્યારે બન્યો? તો કોઈ અંગ્રેજની ઔલાદ આવીને એમ કહેતો હશે કે આ દેશ 1947 બન્યો. આપણા ઋષિમુનિ શું કહે છે? આપણા ઋષિમુનિએ ઋગ્વેદમાં લખ્યું છે, ઓમ ભદ્રમ મિષ્યંત ઋષય સ્વરવિદસ તપો દીક્ષામ ઉપનિષે દુરગ્રે તતો રાષ્ટ્ર બલમ ઓજસ્ય જાતમ તદસ્મય દેવા ઉપસન્નમંતુ. ऋग्वेद में शू कीधु छे? सृष्टि के आरंभ में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने दीक्षा पूर्वक दुर्धर तप किया और उस तप में से इस हिंदू राष्ट्र का जन्म हुआ. कब हुआ? सृष्टि के आरंभ में जब ऋषियों ने तप किया. कब? 1947 में नहीं. जब ये सृष्टि बनी तब हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके ये देश बनाया है और उस देश के हम वासी हैं. 1947 में नहीं बने हम. अन्य लोग हैं, 200 400 500 साल का इतिहास है. हमारा कितने साल का इतिहास है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग. कौन सा चल रहा है? युग. कलयुग में पहले कौन सा था? द्वापर. द्वापर के पहले त्रेता के पहले ऐसा ही था. तो सतयुग कितने साल का होता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं. 17,26,000 वर्ष का सतयुग होता है. कितने? उसके बाद कौन सा युग है? त्रेता. त्रेता युग कितने साल का है? 12,96,000. राम कब हुए थे? त्रेता में हुए थे ना. त्रेता के अंत में हुए थे, मतलब 12,96,000. उसके बाद कौन सा युग है? वो कितने साल का है? 8,64,000. काफी लोगों ने पीछे बैठे बैठे गूगल कर लिया. और ठीक उससे आधा कलयुग, वो कितने साल का है? 4,32,000. ठीक है. अभी हम कलयुग में जी रहे हैं. और कलयुग के कितने साल पूरे हुए? 5,100. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो हम कितने पुराने? 1947 की बात हो रही है. हमारे राम कब हुए हैं? त्रेता में. तो 1296 प्लस 864 और ये 5,000, इतने साल पहले तो हमारे राम हुए. और हम राम कोई हमारे पहले भगवान नहीं, उसके पहले भी भगवान थे. और ये युगों की चतुर्युगी एक बार नहीं होती, ये बारंबार चलती. तो हम कितने पुराने हैं? जो आज हमको ज्ञान पिलाते हैं ना आकर के लोग, धर्मांतरण करने के लिए, और हमारा धर्म कैसे अंधश्रद्धा से भरा हुआ है इत्यादि इत्यादि हमारे बच्चों को बताते हैं ना. हमें उनको बताना चाहिए, बच्चे बेटा जब तू नहीं था, तेरे पिताजी नहीं थे, दद्दा नहीं थे, हम तब भी थे. आज तुम हो, हम तब भी है. कल तुम नहीं रहोगे, हम तब भी रहेंगे. इस भाव का जागरण अर्थात जागा हुआ हिंदू. तो भारत प्राचीन राष्ट्र है. समझ में आपको? 1947 में बना हुआ देश हमारा नहीं है, सृष्टि के आरंभ में बना हुआ देश है. बोलो, भारत प्राचीन राष्ट्र है. बोलो. दूसरा, भारत एक राष्ट्र है. मैंने जो हमको आपको बताया कि अलग अलग गांवों, शहरों और कस्बों को, प्रांतों को इकट्ठा करके बनाई हुई ये कोई यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है. राम कृष्ण शिव हमारे देवता तो है ही, साथ में हमारे पूर्वज भी है ना. राम कृष्ण शिव के रक्त से ही आप और हम भी बने ना. तो जिसका रक्त हमारे भीतर है वो हमारे पूर्वज भी हुए ना. तो राम कृष्ण शिव का इतिहास हमारा इतिहास है. केवल धार्मिक इतिहास नहीं है, हमारा राष्ट्रीय इतिहास भी है. और हम एक देश है पहले से. भाई इसका क्या प्रमाण है? तो विष्णु पुराण में बोला है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतत् भारत नाम भारती यत्र संतति. मतलब क्या? उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र के उत्तर में
हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय है। 2000 साल पहले विष्णु पुराण में लिखा गया। तो भारत प्राचीन राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। बोलो, भारत एक राष्ट्र है। और तीसरा, भारत हिंदू राष्ट्र है। कोई कंफ्यूजन मन में पालना नहीं। हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना भी नहीं है, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने भी बताया कि अपने पूर्वजों का गौरव लेने वाला और हिंदू संस्कृति को मानने वाला एक भी व्यक्ति जब तक इस भूमि पर जीवित है, भारत हिंदू राष्ट्र है। इसका क्या प्रमाण है? भारत हिंदू राष्ट्र है, क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण चाहिए ही नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है ये बताना पड़ता है क्या? वो सूर्य है ऐसा बताना पड़ता है क्या? साबित करो वो सूर्य है ऐसा बोलना पड़ता है? ऐसा बोलना पड़ता है क्या? जो बोलेगा वो सूर्य है उसको 1-2 बजे दोपहर को खड़े करके बोलने का 1 घंटा उधर देख, वो सूर्य है, फिर 1 घंटे बाद बताना। तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है, इसको लेकर के कोई साबिती नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने ग्रंथों में, जब हमारे देश पर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं था, तब इसको लेकर के और एक श्लोक है, हिमालय समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मित देश हिंदुस्तान प्रचक्षते। कि जिस हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में देवों ने एक देश बनाया, उसका नाम है हिंदुस्तान। जहां हिंदू रहते हैं ऐसा स्थान, अर्थात हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र। तो भारत प्राचीन राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, और भारत, एक साथ बोलो, भारत प्राचीन राष्ट्र है। आपका मानना नहीं है क्या प्राचीन राष्ट्र है? साहब इधर से ही आवाज आ रही है। आप सहमत नहीं है तो बता दो। सहमत है ना आप? मातृशक्ति और भारत, मैं भी बोल रहा हूं, मुझे उड़वाड़ આવી જાય છે, હું ક્યારે હિન્દી બોલતો થયો મને ખબર ના પડી। भारत 2000 साल से परकीय शक्तियों के सामने लड़ रहा है। उसका एक कारण यह है कि इस देश की मातृशक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, अरविंद जैसे महापुरुषों को इस मातृशक्ति ने जन्म दिया। और केवल जन्म नहीं दिया, जब जरूरत पड़ी तो म्लेच्छों के सामने, यवनों के सामने, मुगलों के सामने अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध क्षेत्र में उतरने वाली भी यही मातृशक्ति है। तो आपको तो कंफ्यूजन पालना ही नहीं है। हमारी भारत माता का हम जब चित्र देखते हैं तो वो मां है ना, साक्षात मां भवानी है। कैसी है भारत माता? तो ही दुर्गा दशक प्रहरण धारिणी। कैसी है? जिसके 10 हाथ है और एक एक हाथ में क्या है? एक एक शस्त्र है। बोलता है ना वंदे मातरम में, तो ही दुर्गा दशक प्रहर धारिणी। तो ये मातृशक्ति कैसी है? जिसके 10 हाथ है और एक एक हाथ में एक एक शस्त्र है। फिर भी लव जिहाद की समस्या होती है, फिर भी गली में से कोई निकलता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या करेगा। तो अपना स्व क्या है? तो ये देश अहिल्याबाई होळकर, मां जीजा माता और द्रौपदी से लेकर के गार्गी तक जिन्होंने वेदों की ऋचा लिखी। आपको पता है ना, वेदों की ऋचाओं में 23 से ज्यादा महिला ऋषिकाएं थी। तो आपका तो आवाज इनसे ज्यादा होना चाहिए। घर में तो होता ही है, बाहर भी होना चाहिए। तो बोलो, भारत प्राचीन राष्ट्र है। अभी इधर से ज्यादा आवाज आना, संख्या कम है लेकिन 50% आरक्षण है अभी सभी जगह महिलाओं को। भारत प्राचीन राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र है। अभी ज्यादा समय नहीं लेता। कुल मिला के विषय यही है कि हम जिस बस्ती में रह रहे हैं, हम जिस नगर में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वो अन्य अनेक अनेक महापुरुषों का देश है। इसमें कुछ दोष भी कुछ समय में आए तो संत रविदास से लेकर के महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर के अनेक ऐसे महापुरुष यहां हुए
जिन्होंने गलत चीजों को ठीक किया। हमारा मूल चिंतन क्या है? हमारा मूल चिंतन ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं ऊपर हूं, ये नीचे, ये हिंदू चिंतन नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहां तो चराचर में शिव है, ये देखने की परंपरा है ना। पेड़ में भी शिव है, नदी में भी शिव है, पौधे में शिव है, पशुओं में शिव है। तो मेरे ही रक्त मांस का सगा मेरा भाई है, वो मेरे से नीच हो सकता है क्या? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कोई भी हिंदू किसी अन्य हिंदू से रत्ती भर नीचा नहीं है, और कोई हिंदू किसी अन्य हिंदू से रत्ती भर ऊंचा नहीं है, हम सब समान हैं। और यदि ऐसी बातें जब जब आई, समाज में दोष होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए हमारे ही समाज में से लोग आ गए हैं और हमने उनको सपोर्ट किया ना। तो ये हमारी परंपरा है। अस्पृश्यता हिंदुओं को मान्य नहीं है, हिंदू चिंतन को मान्य नहीं है। महाराष्ट्र के एक संत है, संत तुकाराम, नाम सुना है क्या आपने? वो कहते हैं विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। विष्णुमय जग, ये सारा जग विष्णुमय है, वैष्णवांचा धर्म ये हमारा धर्म है, वो भेदा भेद हमें मान्य नहीं है। तो पुनः मैं कह रहा हूं, कोई अन्य भाषा का है, किसी गली मोहल्ले में 10 घर एक राज्य के लोगों के हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों के हैं, दूसरी गली में दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के घर है, कोई दक्षिण भारतीय है, कोई उत्तर भारतीय है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, इससे हम अलग नहीं हो जाते। हम एक मां के बेटे हैं और उस मां का नाम है भारत माता। इतना भाव मन में रखना। अब ठीक है ना, छोटी मोटी चीजें घर में भी चलती है, यहां भी चलेगी, लेकिन हम एज अ समाज, एज अ सोसाइटी आगे आकर के हमारी क्षतियों को दूर करेंगे और भारत मां को, इस भारत देश को सशक्त करेंगे, समृद्ध करेंगे, शक्तिशाली करेंगे। आज हमारे देश के सामने चुनौतियां देखो, पूरे दुनिया में से अलग अलग लोग लगे हैं कि इस देश को खत्म कर दो। जो भी इस देश की हिंदू संस्कृति को दर्शाता है, उसके विरोध में बोलने वाले, काम करने वाले हजारों साल से लोग हैं, होते हैं ना। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ગામ હોય ત્યાં શું હોય? ઉકેરડો હોય ને, તો એ તો રહેવાનો છે, એટલે એની જાજી ચિંતા કરવી, ઉકેરડો વધે નહીં, માપમાં રહે, એની ચિંતા કરવાની, ને તો ઉકેરડો ઘર સુધી આવી જશે। તો ખબર પડવી જોઈએ કયો ઉકેરડો છે, એ પણ ખબર પડવી જોઈએ ને, ના પડવી જોઈએ? તો આ રીતે આપણે આપણા દેશને, આપણા બાળકોને આપણી ધર્મ સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન આપીએ, જે જગ્યાએ આપણે રહીએ છીએ એ ભાવ સાથે રહીએ। અને હું ફરી કહું છું, हम एक है ऐसा मानना नहीं है, हम एक है ये हमें जानना है, और हम सही में एक है। इतना बड़ा देश है, हजारों सालों में अलग अलग भाषाएं बनी, तो हमारी बोलियां अलग अलग हो गई, लेकिन वो मूल एक ही भाषा की बोलियां है, ठीक है ना। अभी यहां डांग में नागली होती है, बिहार में नहीं होती है, बिहार में सत्तू होता है, तो वहां लोग सत्तू खाते हैं, यहां नागली खाते हैं, क्या दिक्कत है? तमिलनाडु में इडली खाते हैं, उससे क्या हो गया? वहां बाकी बिहारी बोलते हैं, यहाँ कानूड़ो केस है, दक्षिण में वेंकटेश बोलते हैं। बात तो उसी की हो रही है ना, उसी नंद के लाल की बात हो रही है, नहीं हो रही है? तो आप देखो, भारत में किसी भी गांव में चले जाओ, आपको हर गांव में एक राम प्यारे मिल जाएंगे। यहां है क्या कोई? रामलाल, राम प्यारे है क्या कोई? है? अरे गुजरात के कोई भी गांव में चले जाओ, आप गुजरात के किसी भी गांव में चले जाओ, आपको एक गांव में एक रामजी भाई तो मिलेंगे, है? कोई पण गांव में जाओ, एक रामजी भाई तो। महाराष्ट्र चले जाओ, आपको हर गांव में एक राम भाऊ मिल जाएगा। मिलते हैं कि नहीं? तो अगर हम अलग अलग होते तो ऐसा होता क्या? तो वो राम भाई है, वही राम भाऊ है, वही राम प्यारे है। जिस शिव की कोई महादेव करके बोल के पूजा करता है, हमारे दक्षिण गुजरात में उसे बूढ़ा देव बोलते हैं। हमारे वनवासी आदिवासी हम जिनको बोलते हैं, वो बूढ़ा देव बोलते हैं। क्या दिक्कत है? हम कृष्ण को गाय में देखते हैं, गाय की पूजा करते हैं। हमारे वनवासी बंधु कृष्ण की मुरली और उसके मक्खन का वो मटका आता है ना, માટલી, એ માટલી જોઈને કૃષ્ણની પૂજા કરે છે। તેથી આપણે અલગ નથી થતા, આપણે એક જ છીએ।
કેમ? કેમ કે આપણો ડીએનએ એક છે, આપણો ધર્મ એક છે, આપણી સંસ્કૃતિ એક છે, એનાથી આપણે એક છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? ખ્યાલ નહીં આવ્યો તો હજી 1 કલાક ખેંચીશ. ખ્યાલ આવી ગયો એમ કહી દો તો પૂરું કરી દઈશું. ચાલો, ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. આપણને બાલાજીભાઈએ જે માર્ગદર્શન આપ્યું, હવે એનાથી થોડીક બીજી પણ આપણે વાત કરી લઈએ.